Guys, a very good morning to all of you. I'm Saba, your English faculty at Oliveboard. I hope I'm audible and visible to you all. Am I audible and visible to everyone? Good morning, Apoorv. Good morning, Usain. Good morning, everyone. Good morning, Sanjay. So we will start with today's editorial. आज के editorial start करेंगे हम लोग. Okay. So, Vishal, it's absolutely okay. See, I told you so many times कि अगर आपको लगता है कि you need mental rest, अगर आपको चाहिए कि you want a break of 1 or 2 days, take a rest but do not quit. So really it is okay that if you find कि आप बहुत ज़्यादा troubled हैं, you are very much distressed, so it is okay to take a rest for day or two and after that make a comeback और ऐसा comeback करिए कि like you excel in everything. So it is completely okay, no need to be sorry for that. But I hope that once you are here, so you are fully prepared, okay, and with and fully determined also, fully prepared and fully determined also. Okay. Good morning, Anushya. Good morning, Kumaran. Good morning, Sai Arvind. Good morning, everyone. So we will quickly start with today's editorial. आज का editorial start करेंगे. Saturday we didn't have any editorial session. तो आज का जो रिवीजन सेशन होगा वो फ्राइडे पर जो भी चीजें बेस्ड थी वो फ्राइडे के रिवीजन सेशन पर होगा. ओके. यस. गुड मॉर्निंग पूर्णिमा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. So I will start with the homework session of Friday. So Friday, Neeraj did the homework. Asti, Arju Arvind, Madhurima, Ravi Shinde, Somu Naik, Sanjeev Kumar, A, Pragya Singh, all these people did the homework. ये सारे के सारे लोगों ने homework किया था Friday का. So this is about the Friday session. Okay. So before starting, we will start our session with a motivational quote that a past is a place to learn from, not to live in. देखिए ये आज के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा relevant है. Suppose yesterday you gave the paper. Now forget कि क्या पेपर हुआ कल का. Focus on means. पेपर जो भी था बिकॉज आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा. कुछ शिफ्ट में पेपर इजी आते हैं, कुछ शिफ्ट में पेपर टफ आते हैं, तो इट विल ऑल बी नॉर्मलाइज्ड. आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू कैन क्वालिफाई. वॉट एवर यू डिड इन द पास्ट, पास्ट इज अ प्लेस टू लर्न फ्रॉम. मीन्स जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई है पास्ट में, so that you should learn from those mistakes, not to live in. It means ये नहीं कि you keep on thinking about past only, you are brooding about that thing only. वहां से सीखिए, ऐसा नहीं कि पास्ट को बिल्कुल भूल जाइए. Take learning, take the good thing from past, learn from your mistakes, learn from your failures and try to apply all those things in your future. Because अगर past के mistakes से आप सीख करके future में वो चीजें apply करते हैं, तो future में of course you are not going to make those mistakes. So future, you can see your future quite bright if you have this habit of learning from past. So please learn from your past failures, but do not dwell upon that. कि सिर्फ उसी के बारे में सोचते मत रहिए. Because past is past, now you have to focus on future. अब आपको आगे ध्यान देना है. So before starting, it's my request कि जो लोग नए आए हैं चैनल पे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे वाईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन विथ मैक्सिमम, so that maximum can join it. Okay. Good morning, Sonali. Good morning, A. Good morning, everyone. And those who have not downloaded our Oliveboard app, please download our app also. एक बार app भी download कर लीजिए. So we will have the glimpse of today's session. आज क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, वो सारी चीजें देखेंगे हम लोग. So first we will start with the revision session. कि कल जो सॉरी नॉट कल, फ्राइडे को हमने जो कुछ भी पढ़ा था, because it is a gap of 2-3 days, I hope you still remember all those words. So we will have the revision session of all the vocabs and idioms and phrases that we saw on Friday, जो हम लोगों ने फ्राइडे को डिस्कस किया था. Then we have आज से स्टार्ट है इंग्लिश की क्लास की. अगर आप बात कर रहे हैं तो आज से स्टार्ट है. यस यस, सारे सेशंस होंगे आज से संजय. 9 AM this session, regular session you will have from today. Then we have vocabs of today's session. Idioms and phrases. आज के सेशन आपके idioms and phrases के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, because 4-5 idioms and phrases you will get to learn. 4 से 5 आपको idioms and phrases दिखेंगे आज के सेशन में. Then we have phrasal verbs also. Complete article है, idioms and phrases भी मिलेंगे, vocabs भी मिलेंगे, phrasal verbs भी मिलेंगे. Okay. Then complete analysis of today's article. International point of view से this article is very important. Okay. इसका इकोनॉमी पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है. So we are going to have complete analysis of today's article. Then we have tone and objective of today's article. Okay. Grammar learning and practice exercise, that is your homework.
So all these things we are going to do today. ये सारी की सारी चीजें करने वाले हैं. See, 4 PM, आज 4 बजे है मोदी का बाबा, आज 4 बजे है आपका पीओ का बैच. इंग्लिश की क्लास की मैं बात कर रही हूँ. इंग्लिश की क्लास आज आपके एसबीआई पीओ बैच 2 में भी है और आईबीपीएस पीओ बैच में भी है. ओके, दोनों चीज आपके 4 PM पे होंगे. इट इज जस्ट एन इमेज. ओके, नाउ I hope you all are ready with revision session. Okay, I'm making his eyes, Sanjay. You're focusing now here. So, okay. Goggles also he's wearing. Okay, now it is okay. Now he has 2 eyes plus he's wearing goggles also. Specs also. Now, chale quickly start with the revision session. Match these words with their corresponding synonyms or antonyms, guys. इन सारे वर्ड्स को उनके corresponding synonyms और antonyms से मैच करिए. You have 30 seconds. ये सारे फ्राइडे के vocabs हैं. Let me see who gives the correct answer, because there is a gap of 2 days. So if you still remember these words, that is really a good thing. अगर अभी भी याद है तो that is really a good thing. Okay. मोदी का बाबा 2.0, please see. The word hidden behind me is ordinary. I hope it is visible. ये ordinary है. Arju A7, B5, C2. Okay. D6. Very good, Arju. Absolutely correct. Absolutely correct. Well done. Yes, I hope now. Oh, 7, 6, 1. Very good, very good. Absolutely correct. Kumaran, Ram, Arju, Apur, all these people. Now see, populism, as I told, it is noun. इससे रिलेटेड एक और वर्ड हमने देखा था, SOP, सॉप. सो बेसिकली सॉप एंड पॉपुलिज्म, दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग. ये वही चीजें होती हैं. द क्वालिटी ऑफ अपीलिंग टू ऑर्डिनरी पीपल, कि आप ऑर्डिनरी पीपल को कैसे अपील करते हैं, बाय गिविंग देम सम इंसेंटिव्स या कुछ उन्हें ल्योर करके, ठीक है, फ्री बीज दे करके. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड पॉपुलिज्म और SOP, सॉप. So A will be matched with 7th. Absolutely correct. These are synonyms. Okay. Then viable, so many times we have seen this word. काफी बार हमने देखा था viable word. Viable, possible, practical, these all are synonyms. So viable we call to possible. So B will be matched with 5th. B की pairing किससे है? Viable से. उसको possible बोल सकते हैं आप, feasible बोल सकते हैं आप, practical बोल सकते हैं. ये सारी meaning होती है viable की, जो चीजें possible हो. Okay. Then we have bypass. It is a good word. Bypass means what? To avoid something. Bypass means what? To avoid something. Avoiding. Okay. बाईपास सर्जरी भी होती है, बट हियर बाईपास इज यूज्ड एज अ वर्ब. बाईपास बहुत सारी चीजों में यूज होता है. अवॉइड और इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली, दैट इज कॉल्ड बाईपास. So 2 will be, C will be matched with 2. Hold, hold means validate, corroborate. It is a verb. This is also a verb. It will be matched with 6th. इसको corroborate आप कर सकते हैं, validate कह सकते हैं, confirm कह सकते हैं, किसी भी चीज से confirm करना. So that is the meaning of uphold. Corroborate, validate, all these are the synonyms. Inducements you can call to incentives. So E will be matched with first. Correct. Bypass road भी होता है. Correct, Sonali. Vitiate we call to mar or spoil. Vitiate we call to mar or spoil. That is called vitiate. F will be matched with third. Skepticism we call to doubtful. Skepticism is a noun. It is called to doubtful. Yes. Skepticism, not doubtful. Absolutely correct. So those who match all these words correctly, many match them. Okay, तो बिल्कुल सही है. Skepticism, doubtful को कहा जाता है. Skeptic is a person who doubts everything. Okay. 3 wrong. How can Apu? A7th you did it correct. B5 is also correct. C1, अच्छा C1, yes. C is wrong. D2, yes. D is wrong. Correct. E incentives. F3, yes. G4. I guess 2 is only wrong, na? Bypass and uphold, these two are only wrong for you. 2, C and D. Oh, it is skepticism.
It is skepticism. This is spelled, this is skepticism. Okay. Skepticism, it is misspelled. One second. Skepticism. Sorry. Okay. This is the correct spelling, is skepticism. Typo error. Okay. Skepticism means what? That is called doubtful. Okay. E is also wrong. Inducement, incentive. Okay. Let's start revision session of idioms and phrasal verbs. Okay. In the last session, we didn't say any idiom. Only these two phrasal verbs were there. Resonate with we call to be in agreement, harmony, or conformity with something. Resonate with means कि किसी भी चीज से to match with something, to be in agreement with something, to be in harmony with something, or in conformity with something. तो किसी भी चीज से आप मैच कर जाइए, या जिसको हिंदी में कहते हैं सामंजस्य बैठाना, तालमेल बैठाना, that is basically called resonate with. Okay, to match with others. Furtherance of means beneficial or conducive to something. Conducive also means beneficial. Helpful you can say. Conducive we call to helpful. जैसे environment is conducive. अगर आपको घर में अपने पढ़ने का माहौल मिल रहा है, you are getting that environment, you can study. So that environment is what? That is conducive for you. So furtherance of means what? Beneficial or conducive to something. Resonate with means what? To be in agreement, harmony, or conformity with something else. So this was all about previous session. जो हमने last session में देखा था उसके vocabs हैं. Now let's start vocabs and idioms of today's session. आज का session start करते हैं. Okay. And I hope you all are ready. सभी लोग ready हैं. So the first word of today's session is median. देखिए median word has so many meanings. Here it is used as a noun. Mean, median, mode आपने मैथ्स में चैप्टर पढ़ा होगा. तो मीडियन कहीं पर भी आता है तो इट कैरीज द सेंस ऑफ एवरेज. यहाँ पर एज अ पैसेज it shows middle of something. As per the article, it is referring to middle of something, that is called median. Okay. तो median word generally आपने देखा होगा एवरेज में पढ़िए या मीन मीडियन मोड आप चैप्टर पढ़िए तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक में मैथ्स में भी it refers to what? It refers to average or middle of something. So median means what? Middle. Okay. It is used as a noun. Median can be an adjective also. It can be an adjective also. Yes. But it is basically a noun. Yes, stats में पढ़ा होगा, maths में पढ़ा होगा, सब जगह पढ़ा होगा आप लोगों ने. Okay. Then we have next word, that is provocative. Okay, provocative means something that provokes you. जो आपको provoke कर दे. So provocative is what? Adjective. Provoke basically we call to गुस्सा दिला दे. कोई ऐसी action, कोई ऐसी चीज है जो आपको गुस्सा दिला दे. So provocative can be called to exasperating, annoying, irritating. Something that irritates you, something that provokes you, जो आपको गुस्सा दिला दे, that is called provocative. Exasperating, annoying, irritating. Okay, it is T-A-T-I-N-G. Once again, let me write it clearly. Just one sec, guys. This can also be called vexing. Vex also means irritate. Okay. इसके लिए एक और word use हो सकता है, that is called vexing. Vexing also means irritating only. Vexing का मतलब भी irritate करना होता है. Okay. किसी को भी गुस्सा दिला देना. Yes. When we have the word strategic. See, strategic word, it is also an adjective and it has been derived from the word strategy. Strategy word से derive किया गया है. Jyotishma, I didn't get your doubt. I didn't get your doubt. See, incite is a verb, provocative is an adjective, but it means the same, to incite someone. Okay? Inciting, you can say, Sonali. Inciting. So you are telling 3 median minus 2 mean. Might be. Mode and medium. Okay? Very poor at maths. So deliberate, planned, tactical, all these are the strategic. Okay? Yes. Yes. Something that you do as per your strategy. जो आप अपनी strategy के according करते हैं, that is called strategic. It is an adjective. It is an adjective. Then next word is teetering. See, there is one word called tethering. I hope you know. Don't get confused. Tethering basically we call to tying up. Okay. One problem we have teething problems. Teething we call to emerging. Teething problems we call to emerging problems, new problems. Whenever we set up a business, तो we have teething problems. जब भी हम कोई नया नया business setup करते हैं, तो we have teething problems.
So that is called teething, that is called emerging. Tethering we call to tying up, but here it is teetering. Don't get confused. Yes, hotspot, tethering, tying up. Yes, ये network वगैरह में generally we use this word. This word basically we use in network and all. Okay. So strategic, yes, you can call to ploy also. Ployed, you can say. Yes, Susan. But ploy is noun, strategic is an adjective. Keep these parts of speech in mind. Okay. So teetering we call to wavering, fluctuating, swaying back and forth. Swaying back and forth. मतलब कोई भी चीज फिक्स ना होना, आगे पीछे oscillating you can say. So oscillating, wavering, fluctuating, swaying back and forth. You are not confirmed. You are not fixed on one thing. That is called teetering. Okay. So I hope you got the difference between all these things. Teetering, tethering, teething. Flip flop also, that is called changing opinion. Okay. So teetering also, yes, you can say flip flopping. Okay. So wavering, fluctuating, oscillating, you can say. Oscillating, किसी भी एक चीज पे फिक्स ना होना, आगे पीछे घूमते रहना, ठीक है, कभी इधर कभी उधर. That is called teetering. Then we have abyss. See, you might have heard one word that is called abysmal. Abysmal we call to bottomless. सबने सुना होगा abysmal we call to bottomless. इसके लिए synonym होता है nadir. Nadir, abysmal, these all are the synonyms of bottomless. It means very, very, very deep. जिसके bottom का कोई limit ही ना हो, कोई अंत ही ना हो. Okay. Yes, you can remember. That can be a mnemonic for you. You can remember that way. Okay. The exact meaning I have told you. Yes. Shaking also you can say. So abyss basically is a noun. Abysmal is an adjective. Abyss noun है, abysmal adjective है. Abyss we call to wide difference between people or region. जब दो लोगों के बीच में या फिर दो रीजन के बीच में, दो कंट्री के बीच में there is a gap, बहुत ज्यादा गैप आ जाती है. So that is called abyss. That is called abyss. Yes. So it can also be termed as bottom. But as per this article, it refers to wide difference between people or region. जब दो क्षेत्रों के बीच में, दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, difference आ जाता है, so that is called abyss. So it can be called bottom, it can be called bottomless, nadir, that is called abysmal. I hope you will remember these terms. Okay. The next word today is offset. It is a good word. It is used as a verb in the context. Yes, it has no abysmal, bottomless, correct. So balance, equalize, neutralize, all these are the meaning of offset. कि offset means to balance something, किसी भी चीज को equalize कर देना, neutralize कर देना, that is called offset. Okay. Then we have heralded. See, herald is a noun. Herald. Herald is a noun. Herald you can say to harbinger. हार्बिंगर बेसिकली वी कॉल टू इन हिंदी वी कॉल दूत. इसे हिंदी में दूत कहा जाता है. ओके. तो जो भी किसी भी चीज का संदेश वगैरह जो लेकर के आते हैं, दे आर कॉल्ड हेराल्ड. दे आर कॉल्ड हेराल्ड. ओके. इट इज अ नाउन, हार्बिंगर. Heralded we call to, it is a verb. It is used in reference to indicated, pointed. Herald as a verb means what? As a verb it means, as a noun it means harbinger. Okay. As a verb it means indicate something, point to something. Indicate or point to something, that is called herald. Yes. Yes. Clear everyone? Abyss song बन जाता है, abysmal, yes, all these are the vocabs. कहीं से भी आप relate कर सकते हैं. So indicated, pointed, that is called heralded. Harbinger is the meaning. As a verb, it means indicate, point. I hope all the words are clear. Okay. Yes, forerunner you can say, harbinger, forerunner, all these are the synonyms of herald. Absolutely correct, Ruya. Absolutely correct. Now, next we have idioms and phrases of today's session. As I said, आज के सेशन में आपको काफी idioms and phrases मिलेंगे. Okay. So the first idiom is pick up the pieces. Pick up the pieces we call to restore one's life or situation to a normal state after shock or disaster. Now, after earthquake, after tsunami, people they pick up the pieces. What they do, मतलब वो फिर से कहते हैं ना अपने जीवन को वापस से बहाल कर देना. Okay, so that is called pick up the pieces, restore one's life or situation to a normal state, bring back to a normal state after shock or disaster. You can say bring back to normal state. कि कभी बहुत बड़ा जो डिजास्टर वगैरह हो जाता है, उसके बाद जो हम लोग वापस से अपनी लाइफ में आते हैं, सो दैट इज कॉल्ड पिक अप द पीसेस, ब्रिंग बैक टू नॉर्मल स्टेट.
Okay, come back to normal state. That is called. Good morning, Sheetal. The next word we have draw a red line. देखिए ये यहाँ से draw a line, you know. We always say draw a line. Draw a line means what? To set a limit. We should draw a line ताकि बाहर का कोई आके हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना कर सके. There should be a line. We should draw a line. Okay. So draw a line we call to टूटी हुई जिंदगी को वापस लाना. हाँ जोड़ना. Yes, you can say. You must pick your pieces from your breakup. Yes, you can say. Okay. So, but draw a straight line means to establish the last limit. It is just higher form of this draw a line. Draw a line का और higher form है कि to establish the last limit of something that is tolerable or forgivable. कि जितना आप tolerate कर सकते हैं, जितना आप forgive कर सकते हैं, उसका एक last line आप draw कर दीजिए. That is called draw a red line. Okay. Red line means what? That वो emphasize कर रहा है draw a line. Put a limit, yes. To set a limit, to set a limit, to set a barrier, that is called draw a red line. Lakshman Rekha खींच देना, yes. So something that is tolerable or forgivable. So you are drawing the last line. Okay? Next. Dust settles. Dust settles down. Generally आपने ये देखा होगा. Once the dust settles down, ये generally आपके इसमें use होता है editorial में. So it means the situation becomes calm or clear after confusion. तो काफी कंफ्यूजन वगैरह हो उसके बाद जब सिचुएशन काम होती है तो दैट इज कॉल्ड डस्ट सेटल डाउन. आई विल डिस्कस दिस मैटर वंस द डस्ट सेटल्स डाउन. इट मींस ये मैटर मैं फिर से डिस्कस करूंगी जब सिचुएशन क्या हो जाए, काम हो जाए, क्लियर हो जाए. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट सेटल्स. यस. Yes, Poonam, correct. You can draw a line, red line for your selection also. If this year is the last year, you have to draw a line. Okay, red line. So dust settles means situation becomes calm or clear after confusion. That is called dust settles. Then we have hollowing out. Hollowing out, you know, कि जनरली देखिए जब भी हम कोई चीज स्टफ करके बनाते हैं, सपोज स्टफ कैप्सिकम यू आर मेकिंग, तो जो अंदर का पार्ट आप निकाल देते हैं, खाली कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड होलोइंग आउट. होलोइंग आउट मीन्स टू रिमूव द इनसाइड ऑफ समथिंग. मेक समथिंग एम्प्टी, किसी भी चीज को खाली कर देना, or to remove the inside of something, that is called hollowing out. Serenity means calmness. Serenity means calm. Okay, placid you can say. Calm, placid, that is called serenity. Situation becomes serene you can say. Situation serene, देखिए serene का मतलब होता है बिल्कुल tranquil, बिल्कुल peaceful atmosphere. यहाँ क्या सेंस आ रहा है कि सिचुएशन जैसे काफी कंफ्यूजन में है, काफी मतलब टेंस्ड सिचुएशन है, और जब सिचुएशन काम हो जाए तो दैट इज कॉल्ड डस्ट सेटल्स. ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांति स्थापित हो जाए, बट जो एग्रावेटेड सिचुएशन है दैट अमेलियरेट्स. Aggravated situation ameliorates, that is called dust settles down. So these are the idioms and phrases of. Yes, we have so many idioms and phrases. Good, Apurv, that you are excited to do the homework. Serenity is, yes, being calm. For serenity, we can see it only peaceful also. Okay. Peace, you can say. Now, phrasal verb, serenity is a noun, serene is an adjective. Remember this thing. Now, phrasal verb we have is cut off. अभी हमने देखा था cut all the ties with. All the ties with means what? To end all the relationship. But cut off means discontinue or break off from something. किसी भी चीज को खत्म कर देना या discontinue कर देना, that is called cut off. So discontinue or break off, that is called cut off. Okay. Then we have turn to. Turn to something means start doing something. Turn to something means start doing something or becoming involved with something, that is called turn to. Yes. Stop, put an end to. किसी भी चीज को खत्म कर देना, स्टॉप कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना. यस, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ कट ऑफ. द रॉक वॉइस क्लास आई विल टेक मोस्ट प्रोबेबली, देखती हूँ इस सैटरडे, इस वीक में तो मैं ले लूंगी एनी हाउ. अगर स्पेशल सेशन भी लगाना हुआ ना तो आई विल दैट अरेंज दैट स्पेशल सेशन एंड आई विल टेक द क्लास ऑफ वॉइस. सैटरडे इसलिए नहीं लिया बिकॉज संडे मेनी हैड द एग्जामिनेशन. So these people only they didn't set like they didn't set that class. Okay, उन्होंने set ही नहीं किया था. But anyhow this week I will take. Okay, अगर मुझे स्पेशल भी लगाना पड़ा सेशन तो I will take that session. Don't worry about that. So these are the phrasal verbs of this session, today's session. Okay, now let's start today's session. But guys, as you know, कल मैं थी नहीं थी, but I was like my network was not well. I was not at my place, my home, so I couldn't interact with you all yesterday. जो शाम का सेशन हुआ था जहाँ पर ये अनाउंस हुआ था. But this is the best time. 60% off you have on this only for these 2 days.
आज पीओ लेवल के क्वेश्चन होंगे मनीष मिश्रा, बिल्कुल पीओ लेवल के क्वेश्चन होंगे। नो नो अपूर्व, आई विल टेल यू कब होंगे। See, 60% off we have on banking subscription. This is just because we are going to celebrate our 10th anniversary. Oliveboard is going to celebrate its 10th anniversary. So this offer is just for 2 days, 8 and 9. 2 दिन के लिए ऑफर है। Try to take the maximum benefit because इतना ज्यादा डिस्काउंट आपको कभी नहीं मिलेगा गाइस। ओके, so those who are interested, जो लोग भी इंटरेस्टेड है, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनी like anyone who is interested, or those who are freshers, those who want to prepare for the upcoming banking examination next year को टारगेट कर रहे हैं, so this is the right time to purchase this course। बिल्कुल right time है because आपकी जो वैलिडिटी होती है वो 12 months 18 months की वैलिडिटी होती है। okay, so you can definitely join this course, whether it is banking light, elite, super elite, जो भी access आप लेना चाहते हो, this is the best time। use code SABA to get additional discount, maximum discount। ये code SABA use करिएगा। okay, and please ask your friends and relatives to avail this offer। okay, then these are the different courses that we run on Oliveboard platform। the best buy plan that I suggest is banking super elite because यहाँ पर आपको mock test के साथ साथ you get live classes also, live practice sessions, that is very important। okay? So as you know, from today we are going to launch this IBPS PO 2020 batch, 2022 batch, 8th of August आज से launch हो रहा है। okay? And today at 4 p.m. we have English class, 4 बजे English की class है। And as I said कि IBPS PO और SBI PO 2 में first I will be discussing grammar topic। ये दोनों बैच SBI PO 2 गोल्ड बैच। इनफैक्ट अगर कोई गोल्ड 1 का है वो भी, because if you have super elite access you can join this batch। बिकॉज ग्रामर यहाँ पर आई वॉज थिंकिंग कि ये पूरा डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगी। सो टुडे वी हैव द सेशन ऑफ टेंस एंड यू नो टेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर ग्रामर लर्निंग। ओके, बहुत सारे लोगों के टेंसेस वीक होते हैं, तो नॉट ओनली बेसिक बट ऑल द कोर रूल्स वी विल बी सीइंग हियर। सारे कोर रूल्स भी हम लोग देखेंगे। तो दोज हु आर लाइक जिनको लगता है कि उनको जरूरत है क्लासेस की, तो प्लीज डू ज्वाइन दिस। ओके, it is going to be a combined session. Again, I'm telling IBPS PO, SBI PO Gold Batch 2. In fact, even if you are a super elite user, so anyone can join this batch because grammar पहले पूरा complete करने के बाद then we will start other topics. So line से series में आपका within a week grammar complete हो जाएगी, then we will. Yes, demo class है, तो no problem. Demo class में क्या tense नहीं पढ़ सकते? Of course we can read. Okay, so anyone can join. We can study. And I will complete tense today. आज tense complete हो जाएगा. Okay. Then next we have SBI PO गोल्ड बैच 2। देखिए ये ऑलरेडी 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, बट इंग्लिश क्लास यू विल हैव टुडे। आज से आपकी इंग्लिश की क्लास होगी SBI PO गोल्ड बैच 2 में। एंड एज आई सेड इसकी भी टाइमिंग वही है बिकॉज ग्रामर के लिए आई हैव कंबाइंड दिस टू बैचेस। For grammar only these two batches are combined, and once I complete the grammar topic, then you have separate for SBI PO gold batch 2 because grammar is common। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दोनों में अलग अलग होगा। We will have multiple sessions of practice sessions also, but ग्रामर टॉपिक जो टॉपिक कॉमन है वो दोनों में कॉमन जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दिस। सी दोस हु हैव नॉट जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जिनको अपडेट्स नहीं है क्लासेस के या जिनको नहीं मिल पाते हैं, प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर अपडेट्स ऑन माय क्लासेस एंड फॉर पीडीएफ ऑफ एवरी सेशन। हर सेशन के पीडीएफ के लिए, क्लासेस के अपडेट के लिए ज्वाइन करिए। अगर किसी को डाउट है तो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप ऑल्सो। आस्क योर डाउट्स विद सबा, आस्क योर डाउट्स विद सबा। So you can join this doubt group also for asking your doubts. Okay. This is the code that you can use to purchase anything on Oliveboard platform. और अभी तो ये कोड आप ज्यादा यूज करिए because 8th and 9th you have the offer. This is the best time, golden time to purchase this course. Okay. Yes, if tense comes handy, of course tense is very, tense and verbs, these two are the most important topics. Okay. So tense, verbs, subject, verb, agreement, at least ये सारे topics to complete कर लीजिए. So let's start today's article. Okay. We have revised all the verbs, सारी चीजें clear है. Let's start. Cooling the temperatures on US-China relations after Pelosi's Taiwan visit. ये आपने देखा होगा कि लास्ट वीक की ये सबसे ज्यादा बर्निंग इशू था एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अवर इकोनॉमी ऑल्सो। ये आपकी इकोनॉमी को भी पूरी तरह से अफेक्ट करने वाला है। ओके, जैसे आपका ये रशिया वॉर जो था,
सो रशिया एंड यूक्रेन वॉर, जितना इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल था उतना ही इंपॉर्टेंट ये है, ये भी काफी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है. सो एवरीवेयर दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो कूलिंग द टेम्परेचर्स, नाउ व्हाट डज इट मीन? कूलिंग द टेम्परेचर्स मींस कि जो पेलोसी के विजिट से, नैन्सी पेलोसी के जो विजिट से जो माहौल गर्म हुआ है, मतलब कि द सिचुएशन हैज एग्रावेटेड. सो नाउ दैट इज गोइंग टू, लाइक पीपल आर वर्किंग टू अमेलियरेट दैट सिचुएशन, उसी को पैसिफाई करने की कोशिश हो रही है. ओके, सो कूलिंग द टेम्परेचर्स ऑन यूएस चाइना रिलेशंस आफ्टर पेलोसीज ताइवान विजिट. ओके, कि पेलोसी का जो ताइवान विजिट है उस पे जो रिलेशन है यूएस एंड चाइना का, द आर्टिकल इज बेसिकली ऑन दैट. यस, इस सिचुएशन करेक्ट. अच्छा, आई एम गिविंग यू 2 minutes, जस्ट गो थ्रू दिस, quickly go through this. 2 minutes I'm giving you. And please focus on verb also, subject also, everything. Now let's see. The US, China, and Taiwan are left picking up the pieces after Nancy Pelosi's visit. Okay. Now see, there are three countries that are involved: US, China, Taiwan. अब जैसे ही नैन्सी पेलोसी की विजिट थी जो ताइवान में, ओके, सो आफ्टर दिस ऑल दीज थ्री नेशंस आर ट्राइंग टू कम बैक टू नॉर्मल स्टेट. ये वापस से अपने नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, that the 4-day military exercises conducted by China, the subject of this conducted is 4-day military exercises in the waters. No, see, water का plural use हुआ है. Generally we say कि water is an uncountable noun, it cannot be used in plural form, but यहाँ पर आप देख सकते हैं कि waters word use हुआ है and it is absolutely correct. So waters word here refers to ocean. Waters word here refers to ocean. Whenever we talk about the large water bodies, जब भी बहुत large water bodies की बात होती है तो of course we can use the word waters. Okay, and airspace surrounding Taiwan concluded on August 7 with incident comes as a relief to the region. पहले verb और subject देख लीजिए ताकि आपको clear हो जाए कि क्या चीजें किसके लिए use हुआ है, so that you can get the meaning. Okay, concluded has been used for 4-day military exercises. इसका भी सब्जेक्ट यही है कि 4 दिन की जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी चाइना ने कंडक्ट की थी, वाटर में भी, एयर स्पेस में भी, जो भी ताइवान से आसपास के एरिया थे. ओके, दिस एक्सरसाइज कंक्लूडेड ऑन August 7. 4 दिन की एक्सरसाइज 7 अगस्त को कंप्लीट हो गई, कंक्लूड हो गई. विदाउट इंसिडेंट कम्स, मतलब कोई बहुत मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई वॉर वगैरह स्टार्ट हो गया. This comes to that this exercise comes to an end as a relief to the region. Okay, कि अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है विदाउट एनी कैजुअलिटी. सो दिस comes as a relief to the region. Is it clear? Without incident means without any casualty. Arjun, like there is no war and something like that. कोई ऐसा बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं हुआ दोनों के साइड से. So that is the meaning of without incident, and this is something that comes as a relief to the region. Okay. The drill saw, जो भी military exercises थी, drills here means, very good, Hussain. Good thing. Till the selection, you have to do this thing. Drills here means exercises. The drill saw Chinese military not only cross the median of Taiwan Strait, but also fire missiles above Taiwan, aggressive acts that could have easily led to unintended escalation. Now you will get the meaning of everything. ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी, दिस सॉ चाइनीज मिलिट्री, इन्होंने सिर्फ मतलब वो जो ताइवान स्ट्रेट था उसको क्रॉस ही नहीं किया था, बट ऑल्सो फायर कन्वेंशनल मिसाइल्स, उन्होंने काफी ज्यादा मिसाइल्स भी फायर किए थे अबव ताइवान. ओके, एंड दिस एक्ट्स आर व्हाट, दीज आर एग्रेसिव एक्ट्स. चाइना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी एग्रेसिव एक्ट्स को करने की. ओके, एंड दीज एक्ट्स कुड हैव इजीली लेड टू अनइंटेंडेड एस्केलेशन, कि आराम से इस पे बात बढ़ सकती थी. Had Taiwan reacted,
ताइवान ने रिएक्ट कर दिया होता तो ऑफ कोर्स ये चीजें बहुत एस्केलेट हो जाती है, ये इशू। बट ताइवान डिडंट रिएक्ट, ताइवान ने रिएक्ट नहीं किया, दैट इज व्हाई दिस हैज बीन पासिफाइड। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट इंसिडेंट। इट केम विदाउट इंसिडेंट बिकॉज ताइवान डिडंट रिएक्ट, ताइवान ने रिएक्ट नहीं किया था। That they अच्छा, not only but also आप देख लीजिए, they have been used before same parts of speech, not only cross before verb, main verb, but also fire, but के साथ आप verb के पहले लगा है। So this also you can see कि correlative conjunctions are always used before same parts of speech. Could have possibility, yes. Could have means could have easily led to. ये हो सकता था in unintended escalation, but it didn't happen because Taiwan didn't react. So this is the meaning. This rule also I hope you got. अगर यहाँ पे also ना होता तो भी ये सही होता, because these days in modern English not only के साथ but आता है, also sometimes they omit also. It is also not necessary कि but also हमेशा साथ साथ में ही आएगा. Okay, so keep these all things in mind. That they did not lead to any incidents. Now the subject of is that. Okay, they did not lead to any incidents is credit to the sober response from Taiwan's military. Okay, now the credit goes to whom? The credit goes to Taiwan's military, that these people, they didn't react, they acted very soberly. काफी sober way में इन्होंने react किया है. So this is something that credit goes to Taiwan military. Which said, now which has been used for military, which said monitored China's exercises, कि इन्होंने चाइना की हर एक्सरसाइज को, हर ड्रिल को मॉनिटर किया था, some of which were held within 12 nautical miles of Taiwan, कि कुछ कुछ चाइना के जो एक्सरसाइज थे, जो उन्होंने मिसाइल वगैरह की थी, ओके, जो लॉन्च किए थे, वो ताइवान के 12 nautical miles के अंदर तक थे। But chose here, it has been used for Taiwan military only. But Taiwan's military chose to neither engage Chinese aircraft and warships nor shoot down missile, कि ताइवान ने कोई भी काउंटर अटैक नहीं किया या रिएक्ट नहीं किया। ओके, yes, correct, trend is changing. See, English is a language where every day you will get modification. So of course you have to, and modification, the best thing you can see from newspapers only. So you should keep an eye on all these things, keep an eye open कि जहां जहां जो भी changes हो रहे, keep an eye open on all these things. Okay, because सबसे पहले ये सारे changes editors ही लेके आते हैं. So I hope you got this point कि this Taiwan's military, they chose neither to engage, मतलब वो कोई भी reaction नहीं देना चाहते थे. Okay, Chinese aircraft and warships, so they didn't react. If the drills were certainly provocative, China's justification is that they were a needed response to draw a red line after what Beijing has seen as needless American provocation that triggered the entire crisis. Okay. Now, what China is justifying? China is justifying that they were a needed response. मतलब ये जो needed is what? It is an adjective. It is an adjective. Response is what now? कि this response was definitely needed, बहुत ज्यादा required attempt था, because this is something that China did to show the line, to draw a line for America, US. Because of this US visit only, Nancy Pelosi की जो visit थी, that only triggered the entire crisis. उसी ने सारे crisis को क्या क्या trigger किया हुआ है. So just China wanted to draw a red line. It wanted to set a limit for USA. That is why it has conducted all these exercises in Taiwan. Is it clear? The August 3rd visit of US House Speaker Nancy Pelosi to Taiwan, the first such high level engagement in 25 years, has been used for visit. Okay, was in China's view further evidence of Washington hollowing out its commitment to a one China policy. Now, this visit of Nancy Pelosi, this has been the first high-level visit after in 25 years. कि पिछले 25 सालों में इतनी important visit ने senior person की, I hope you know Nancy Pelosi. She is what? She is the US House Speaker. Okay, so this visit is what? कि it is the uh, means very high-level visit in 25 years. इतने prominent person ने अभी तक ताइवान में visit नहीं किया था from US. Okay. So China said he was in China's view further evidence of Washington hollowing out. Hollowing out means like empty commitment. खोखला जिसे कहते हैं कि US ने commitment तो कर दिया था कि one India, one China policy में it will not intervene, but that commitment has seems to be empty. It means it seems to be hollow.
कि वो बिल्कुल खोखली है, बिकॉज़ अगर अमेरिका अपनी बातों पे कायम रहता तो ऐसा विजिट वो पॉसिबल नहीं होने देता। ओके? As the dust settles now means situation eases. Okay? चीजें थोड़ा सा रिलैक्स है, काम है. It is difficult to see what all three parties, the US, Taiwan, and China, will ultimately gain from a visit that appears to have been driven more by Miss Pelosi's political inclinations than any well considered long term strategic objectives. Now, once the situation has become normal, once the situation has controlled, okay, it is difficult to evaluate, it is difficult to ascertain कि ये तय करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये तीनों पार्टीज आखिर चाह क्या रही थी, ये जो विजिट था इससे क्या गेन मिला. ओके, because this visit has been driven more by Miss Policy's political inclination than any well considered long term strategic objectives. I hope you know कि ये विजिट यूएस ने इंटेंशनली नहीं की थी. इवन यूएस वाज आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ दिस विजिट. यूएस भी नहीं चाहता था कि नैन्सी पेलोसी ऐसा कोई विजिट करे, because it is going to strain the relationship between US and China, जो कि पहले से ही बहुत खराब है. Okay, so US also didn't want Nancy Pelosi to visit Taiwan, but it was Nancy Pelosi's personal wish. वो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई थी कि जिसके बेसिस पे उन्होंने विजिट किया था. It was her own political inclination. It was not the any interference of US. So this thing has to be made clear. So even US also, it was not very much in approval of, or you can say in conformity with this visit. वो भी नहीं चाहता था. Inclinations, political inclinations. Inclination means propensity, झुकाव. उनका खुद का political aim, you can say. It didn't have any well considered strategic objective. Strategic means कोई जानबूझ के tactical objective नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई चाल नहीं चली गई थी. It was not a conspiracy. Okay, was just and just his inclination, you can say, to yes, propensity. Here it refers to her own aim, her own goal towards political inclinations. Okay. Propensity, likelihood, you can say, fondness, simply you can say fondness. Okay, उनके खुद के पॉलिटिकल प्रोपेंसिटी की बात हो रही थी. क्लियर? नो. It is thus not hard to see why even US President Joe Biden and the US military had cautioned against a trip that brings no lasting strategic benefits for Washington. Is it clear? Now, I have made this thing clear कि even US President and US military, they also cautioned, उन्होंने भी पहले से उनको caution किया था कि अगेंस्ट अ ट्रिप दैट ब्रिंग्स, कि इस ट्रिप से कोई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट होने वाला नहीं था वाशिंगटन को. Washington or US is not going to be benefited by this trip anyhow. So that is why they have cautioned against this trip, because it is not going to bring any benefit to US. Okay? For Taiwan, 23 million people, and for President Tsai Ing-wen, he is the president of Taiwan, and the total population of Taiwan is 23 million. Okay. The rare high profile foreign visit was no doubt welcome in the face of increasing global isolation on account of China's pressure. Now, see, Taiwan was itself isolated. China के pressure पे Taiwan जो है already isolated था. Okay. This was this high profile visit, first high profile visit was going to be something beneficial for Taiwan. यूएस को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला था, बट ताइवान के लिए थोड़ा सा ये ट्रेड वगैरह के पैक्ट में मतलब कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट मीटिंग थी. सो दैट इज व्हाई ताइवान वेलकम्ड दिस विजिट. ताइवान ने इस विजिट को एंटरटेन किया, इसको वेलकम किया. अदरवाइज ताइवान ही मना कर देता. ओके, बट ताइवान वाज सीइंग इट्स ओन बेनिफिट इन दिस विजिट. ओके, in face of increasing, in face of means in context of, yes, in the circumstances of, yes, increasing global isolation on China, because already it was facing all these pressures. So this visit was quite welcome for Taiwan. That short term benefit may, however, be offset by the fact that Miss Pelosi has arguably left Taiwan with a far worse strategic environment. Now, this benefit that Taiwan was considering, okay, this benefit that Taiwan was considering, it was a short-term benefit, momentary benefit था ये, कुछ ही दिनों का benefit है. But this benefit can be neutralized. Offset means what? Neutralized. ये जो थोड़ा बहुत उन्हें benefit मिलने वाला था, this can be neutralized, nullified
by the fact that Miss Pelosi has arguably left Taiwan with a far worse strategic environment. कि इन्होंने ताइवान के एनवायरनमेंट को और ज्यादा स्ट्रैटेजिक मतलब और ज्यादा इन्होंने यू कैन से सीरियस कर दिया है. ओके, कॉन्स्पिरेसी वाला एनवायरनमेंट कर दिया वहां पर. China's military has indicated its action have now heralded a new normal in military activity across the Taiwan Strait, bringing it ever closer to Taiwan shores. क्या होगा कि चाइना के मिलिट्री ने ये साफ साफ इंडिकेट कर दिया है कि नाउ देयर मिलिट्री एक्टिविटी इज गोइंग टू बी इवन क्लोजर टू ताइवान शोर्स की अब और ज्यादा वो जा करके ताइवान में और ज्यादा इंटरफेयर करेंगे. ओके, उनके जो मॉक ड्रिल्स वगैरह है वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे, मोमेंटम गेन कर लेंगे. सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर ताइवान. Beijing and Washington, meanwhile, are left picking up the pieces of an already strained relationship that is now teetering on the edge of an abyss. Okay, teetering, as I said, it means what? Abyss, I said, it means abyss basically we call to distance between relationship. Okay, distance you can say कि ऑलरेडी दोनों के रिलेशन में काफी ज्यादा जो है क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहे हैं, काफी स्ट्रेन रिलेशनशिप है. नाउ बीजिंग एंड वॉशिंगटन दे आर पिकिंग अप द पीसेस, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द सिचुएशन टू नॉर्मल स्टेट आफ्टर क्वाइट स्ट्रेन रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड टेंस रिलेशनशिप दैट इज नाउ टेटरिंग. इट मींस वेवरिंग, मतलब और ज्यादा खराब होने के बिल्कुल अबिस्मल स्टेट पे जाने वाली सिचुएशन में है. ओके, सो टेटरिंग वी कॉल टू वेवरिंग, फ्लक्चुएटिंग यू कैन से, fluctuating on the edge of an abyss. Abyss basically we call to bottomless. Okay, and here it means something that is going to end. कि इनके जो रिलेशनशिप है दोनों देशों के वो बिल्कुल खत्म होने वाले स्टेट पे हैं. ओके, सो बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू रिस्टोर दैट सिचुएशन टू नॉर्मल. The focus must now turn to cooling the temperatures. Cooling the temperatures means what? Pacifying the situation. Pacifying the situation. ये जो सिचुएशन एग्रावेट हुई थी उसी को कोशिश की जा रही है कि उसी को पैसिफाई किया जा सके. Doing so will be easier said than done with low levels of trust between world's two biggest powers. Now, if we say कि अब दोनों देशों के बीच में जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा कहना आसान है. सी, डूइंग सो विल बी इजियर सेड दैन डन, कि कहना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है. Because these two world's biggest power, China and US, now these are the two world's biggest powers. They have the lowest levels of trust. उनके बीच में जो ट्रस्ट है बिल्कुल ना के बराबर है. So it is very hard, it is very difficult to bring back the situation to a normal state. कि वापस से फिर से normal state पे करना situation, that is very very tough. Okay, not an easy task. In response to Miss Pelosi's visit, Beijing last week said it will cut off military channels with Washington by cancelling 3 dialogue mechanisms. कि जब उसने बोला कि अब वो सारी चीजें जो है जो भी मिलिट्री चैनल है उसे डिसकंटिन्यू कर देगा. Of means what? Discontinue, end. Okay, तो जो भी 3 key dialogue mechanism है it will end all those things. That too at a time of heightened military tensions, और वो भी ऐसे टाइम पे जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन है. For it is said, now this is a saying, this is a quote. For it is said, it is too important to be left to the generals. Means what जो है सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी भी नेशन के पॉलिटिकल पर्संस पे आप डाल देंगे. Wavering means twinkling, not twinkling you can say. Oscillating na. Wavering means oscillating, fluctuating, not twinkling. How can you say? Okay. So war is something that cannot be left only to the this decision of generals. Okay, the same may be said of relations between nations. जैसे war हम सिर्फ और सिर्फ politicians के नेताओं के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं. The same will be about relations between nations also. Okay, yes, you can say they should not be hostage to personal ambitions of politicians. Now, nations here means citizens. They should not be hostage to personal ambitions of politicians. कि सिर्फ और सिर्फ हमें पॉलिटिशियंस के मतलब जो उनके पर्सनल एम्बिशंस हैं सिर्फ उन्हें ही नहीं पूरा करना चाहिए. वी शुड हैव आवर ओन लॉजिक आल्सो, बिकॉज वॉर डजंट ब्रिंग एनी गुड. वॉर से कुछ अच्छा नहीं होता. अभी आपने देखा ही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड रशिया वॉर एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग. ये जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है आज इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में,
सो की रीजन बिहाइंड दैट इज द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, सबसे ज्यादा मेजर इशू वही है। एंड इन दिस सिचुएशन अगर चाइना और यूएस के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाए या कुछ भी ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाए ट्रेड रिलेशनशिप, अगेन दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट। ऑलरेडी ये जो 4-5 दिनों में ये जो इंसिडेंट हुआ है, दिस हैज आल्सो अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ओके, बिकॉज ये जो चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की है उससे जो पूरा ट्रेड था वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया था। सो देयर इज समथिंग दैट समथिंग इज हैपनिंग बिटवीन यूएस एंड चाइना, या किसी भी दो देशों के बीच में कुछ भी होता है ऐसी सिचुएशंस, especially when we are talking about superpower countries, so of course it is going to affect the economy of the entire world. So this is something that we must learn from this article. Okay, so I hope the article is very clear to everyone. सबको क्लियर हो गई आर्टिकल? काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज की। Now what is the tone of the article? Gullible basically we call to a person who readily believes others. Gullible we call to who readily believes others. Innocent आप कह सकते हैं, जो आसानी से दूसरों पे यकीन कर ले। ओके, यस, informative you can't say no. Optimistic, not optimistic. But how can it be optimistic? Optimistic तो नहीं कह सकते. Concerned we have. The tone is of concern. Yes. Suggestion, just in the last line we have suggestion. Last line is suggestion. Okay. Basically, overall tone, if you talk about, it is concern. It is a tone of concern. Yes. And reflective also, because it is making us think. Yes. Reflective and concerned. Optimistic कहीं से भी sense आया optimistic का no. Okay. Yes. Concerned and reflective. So basically, it is for us to think. Okay. Author was thinking something. It's okay. Reflective, not reflexive. Reflexive तो देखिए फिर again don't see that कि the war was reflexive action of, you don't have to see the action of America. You have to see, so many times I have told, tone means author's viewpoint. देखिए रिफ्लेक्सिव क्या है, अमेरिका का जो एक्शन है दैट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अमेरिका का जो एक्शन था आफ्टर, सॉरी, चाइना का जो एक्शन था आफ्टर नैंसी पेलोसी's विजिट, दैट वाज रिफ्लेक्सिव, दैट वाज रिफ्लेक्सिव। बट ऑथर का टोन कैसे रिफ्लेक्सिव हो सकता है? See, they are trying to ameliorate relationship, but it is written, it is hard to do than to say, मतलब it is more difficult to do than to say, कि वो ज्यादा करना बहुत आसान नहीं है। तो इट इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक, दे आर नॉट सेइंग कि, मतलब सी दीज लाइंस, डूइंग सो विल बी इजियर सेड दैन डन, कि ये कहना आसान है कि दोनों को अपने रिलेशनशिप सुधार लेना चाहिए, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। ओके, सो इट इज समथिंग, डिड यू गेट अर्जू? सो टोन कहीं से भी ऑप्टिमिस्टिक, वी आर नॉट गेटिंग द सेंस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। सी डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्टिव, first of all, you should know the difference between tone and the article. Article जो अमेरिका का एक्शन है that is reflexive. Reflexive means something that we do in uh, to support some event, you can say. Sober means here, no, sober doesn't mean prudent. Sober here means very, you can say dignified. Dignified. That is called sober. Serious, yes. That is somber. Somber we call to serious. Somber mood we call to serious mood. Sober कहते हैं ना, very sober person, dignified. कि इतने सारे चाइना के अटैक होने के बाद भी this Taiwan didn't react. So this is something that is called this sober, dignified, you can say. So there is a difference between sober and somber. These all meanings I have told Neeraj. Picking up the pieces means to restore the normal situation. Situation को फिर से normal कर देना. Yes. See, reflexive and reflective. Reflexive means we call to quick. जैसे अगर कोई चीज आपके आईज के पास आई, quickly you close your eyelashes. So this is your reflex action.
तो रिफ्लेक्सिव मीन्स सपोर्ट पे या क्विक एक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. ओके, सो जो चाइना का एक्शन था दैट इज रिफ्लेक्सिव. ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट द ऑथर्स टोन, रिफ्लेक्टिव मीन्स समथिंग दैट इज थॉटफुल, something that is thoughtful. Okay, the dominating tone is only of concern. The dominating tone is only of concern. Can be Sayarvin. It can be somber, can be as a synonym of sober. Okay, because if you are somber, of course you will be sober. So did you get the difference? And tone is always author's attitude. Tone हमेशा हमेशा author का attitude होता है. So reflexive can't be the tone here. Optimistic is also not the tone because optimistic तो कहीं से sense आ ही नहीं रहा है. Hmm. Author is thinking about the situation. He is thoughtful. So yes, reflective can be the tone. Concerned. And अगर reflective नहीं दिया है option में, because tones also means you have to see the option. Analytical also can be the tone. Analysis is also doing. Is also doing the proper analysis. Okay. So these are the tone. And the most dominating one is concerned. Now what is wrong here? Quickly. What is wrong here? Very, very basic grammatical error it is. Why left is added means they are doing they have nothing to do, they are left with only this thing, they have to mend the strained relationship with नीरज शर्मा. जब उनके पास कुछ बचा नहीं है सिर्फ उनको रिस्टोर सिचुएशन को रिस्टोर करने के अलावा, बिकॉज जो होना था वो तो हो चुका. नॉट दे आर लेफ्ट विद नथिंग एल्स. हाँ, इट्स ओके. रिफ्लेक्सिव वी कॉल टू जब किसी के रिएक्शन में हो समथिंग. ओके, इमीडिएटली आफ्टर समवन्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. will replace would. Yes. Now listen, this last week it has been used for in response to Miss Pelosi's visit Beijing. Beijing last week said, इसने कहा क्या था, ये last week में कहा था. ओके, क्या कहा था? It will cut off. अभी किया नहीं है. It will cut off. It will do something. Okay. So it will cut off. This will is absolutely correct because इसने कहा था in response to Miss Pelosi's visit, but still it has not been done yet now. Okay. So this is absolutely correct because ये अभी करेगा. It will cut off military channels with Washington by cancelling 3 key dialogue mechanisms. The error lies here. Now 3 is plural. Now 3 refers to what? Plural noun. So it will be 3 key dialogue mechanisms. That too, this too is absolutely correct. This too here means also. This is not an infinitive. This is not an infinitive. This too here means what? Also. That too at a time of heightened military tension. कि ऐसे टाइम पे वो कट ऑफ करेगा जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिलिट्री टेंशन चल रहे हैं. ओके, क्लियर एवरीवन? So this is 3 is given. See, you can't say 3 student. You can't say 3 mechanism. So this is something very, very basic error. It will be 3 key dialogue mechanisms. After 3, we need plural now. Clear everyone? Any confusion? When it is, see, this is something I'm telling you. This here conjunction that has also not been used. Okay, that has also not been used. We change will into would when we get an action of past. Okay, ये तो देखिए अभी न्यूज है. अगर यही चीज 2-4 दिन बाद हो जाएगी या आफ्टर 1 मंथ ये चीजें आ जाएंगी तो यू कैन से कि हाँ विल को वुड में चेंज करेंगे बिकॉज ताइवान ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर लिया होगा. बट दिस इज समथिंग दैट इज फ्रेश. Course, if you talk about your examination, तब तक तो ये past में हो जाएगा. You can change will into would. Okay, when this verb is in past, you can change it into past. Neeraj is asking 3 people or 3 people. So I'm telling Neeraj. But here it is something fresh because news में आया है. Still it has to do something. Okay. So this is absolutely correct. Is it clear, Arju? Thank you, Pur. And 3 people is absolutely correct. We can't say peoples because people is already plural. We don't have to use. See, this also I have told these days that is also not required every time. That is also not required every time. This that is understood. अगर that होता तो भी सही था, नहीं होता तो भी सही था.
एंड वन मोर पॉइंट आई विल टेल यू, एक बात और मैं बताऊंगी कि सपोज यहाँ पे लिखा हुआ सेट, आफ्टर दैट समथिंग इज विद इन इन्वर्टेड कॉमास, सपोज यहाँ पर चाइना का डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाए, so even though this verb is in past, inverted commas things are always in present because वो डायरेक्ट स्पीच को कोट करता है, तो ये प्रेजेंट में हो सकता है, which can be in any present tense. So keep all these things in mind कि कब के किस एक्शन को रेफर कर रहा है. Tenses always refer to actions of time. Okay. So people is absolutely correct because people in itself is plural. Peoples if we say तो meaning change हो जाएगी. फर्स्ट वर्ब का सब्जेक्ट आपका है इन रेस्पॉन्स टू मिस पेलोसीज विजिट, बीजिंग लास्ट वीक सेट, तो द सेट सब्जेक्ट इज बीजिंग, बीजिंग ने कहा था, तो बीजिंग हियर मींस व्हाट कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस में बात हो रही है, चाइना के रेफरेंस में बात हो रही है. ओके, this I will be able to tell you only when I teach this pronoun because यहाँ पे बहुत key difference होता है that and which में. So when I will teach pronoun wrong, definitely I will confirm. Okay, both are relative pronouns, but there is a difference, slight difference, so that I will let you know. Okay, so I hope the entire article is clear to you. Error is very simple. 3 mechanisms. That's it. Of course, Apura, I will do. Okay. Any more confusion? The rock, is it clear? दैट एंड विच में वैसे भी मैंने बहुत बार डिफरेंस बताया है कि दैट एंड विच बोथ आर रिलेटिव प्रोनाउन, बोथ कैन बी इंटरचेंज, बट देयर आर फ्यू केसेस जहां पे सिर्फ दैट ही यूज होता है, वी कांट यूज विच. ओके, सो थैंक यू ऑल. नाउ दिस इज होमवर्क सेशन. यू हैव टू यूज ऑल दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. ये सारे के सारे वर्ड्स आपको सेंटेंस में यूज करने होंगे. ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन. So today we have at 9 a.m. we have IBPS PO series. Okay, मेंस लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे आज भी IBPS PO में. ओके, that is going to be, and it is going to be for relevant for both PO and clerk, दोनों में ही मेंस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, so please do attend. Okay, so it is going to be a combined series of PO plus mains. Okay, so thank you all. We meet at 9 a.m. Thank you, Apur. Thank you so much. We'll meet at 9.